let's start from page number 44 onwards. I mean backwards. So there is this preservative for acidic foods, and this is sodium benzoate. Okay, so acidic foods के लिए sodium benzoate का इस्तेमाल करते हैं. And I think I have read couple of more preservatives like for jams, etc. I read, but right now I'm not able to recall that. Anyway, sodium benzoate, that is a preservative used for acidic foods. Then dry fruits and spices preservative, epoxide of ethylene or propylene. So epoxide of ethylene and propylene, that these are used in dry fruits and spices preservative, epoxides of ethylene and propylene. Okay, then the process of pasteurization is done at 63 or 72 degrees. The bacteria is usually found in the canning. They are the endospores that cause botulism, food poisoning in the canned food. So these are endospores. Other organic acids to preserve food are benzoic acid. Yes, so that was sorbic acid and propionic acid. So propionic acid, sorbic acid and benzoic acid, these are some popular food preservatives, including epoxides of ethylene and propylene. And these preservatives are also used in the form of salts like sodium benzoate, potassium sorbate, and sodium propionate. Also, cinnamon and cloves contain benzene derivative eugenol. So cinnamon and cloves, these contain a chemical called eugenol, which is also an antimicrobial agent. Good antimicrobial agent, eugenol, that is found in cinnamon and cloves. Then this person called Henry Cavendish, he first discovered that hydrogen is a discrete substance. So you can remember that hydrogen as an isolated discrete substance, that this was discovered by Henry Cavendish. And heating values in decreasing order. So actually this by this I mean the amount of calories that you can extract from burning these things. So you know, the maximum you can achieve from burning LPG and then CNG and then methane. So and then comes the liquid fuels like petrol, kerosene and diesel. So you can see here that it's the fuels of the gaseous nature that are giving us most amounts of energy on burning them. So this thing, like the first one is going to be LPG, that gives us the maximum amount of heat energy on burning it. Then we get CNG, and then we get methane, and then we go to the liquid fuels like petrol, kerosene and diesel. Then below that comes biogas, then comes coal, and then comes wood, and then the last one is cow dung. So you can burn cow dung, but it's going to give you the least amount of heat energy for cooking purposes. ठीक है, तो एक बार फिर से अगर बताएं इसको ऑर्डर में, तो LPG है, फिर CNG है, फिर methane है, and then come the liquid fuels which are basically petrol, kerosene and diesel, and then comes, I think, then comes biogas, right? So that's an exception. Then comes biogas, and then comes coal, wood and cow dung. Now Henry Cavendish first discovered that hydrogen is a discrete substance. Then a diesel engine makes ignition of fuel by using the heat produced by compressing the air in a closed space, and that's the piston basically. There is no carburetor in diesel engines for combustion as in the petrol engines. Thus the compressed air vaporizes the diesel and ignites it. Diesel is related to cetane number, while petrol is related to octane number. So you must remember that there is no carburetor in the diesel engines. There is no carburetor in diesel engines for combustion as in the petrol engines. The air is compressed so much that through adiabatic pressure some heat is generated, and that air sort of starts to burn through the intense adiabatic pressure, and then it vaporizes the diesel and ignites it, and that's how diesel engine work. There is no carburetor, right? Now the first cattle dung based biogas plant, or you can just remember that the first biogas plant was set up in 1941-42. That's even before our country got independence, in IARI. That is, I think it's related to it's a premier institute related to agriculture in New Delhi, and by S.V. Desai. So this initiative or innovation was brought about by S.V. Desai. The first cattle dung based biogas plant by S.V. Desai in 1941-42, right? Now the reason why domestic cylinders are not provided with pressure gauze, as it contains LPG in liquid form, unlike most other cylinders with pressure gauze that contain gas. So the domestic LPG cylinders are not provided with pressure gauze because the fuel in it is in the liquefied form, and
the pressure gauze is given only in cylinders which have gaseous fuel, ठीक है. Now LNG की बात करें, LNG is mainly a natural gas, predominantly methane, that has been converted to liquid form for the ease of storage or transport. So liquefied natural gas is nothing but liquefied version of methane gas for the ease of transport or storage. Now the first LNG terminal was set up at Dahej, that was in Gujarat. The main components of LNG include methane, propane, and ethane and butane, and also isobutane in some small traces. Methane present in the CNG can be directly used to burn for cooking, or we can just say that methane can be directly used for cooking. It need not undergo any sort of processing further. So okay, that is what I was telling you, that LNG or liquefied natural gas is nothing but the liquid version of methane for the ease of transport and storage, right? The first such LNG terminal was set up in Dahej, Gujarat. Then I have told you that why domestic cylinders, LPG cylinders, are not provided with pressure gauze. Then the things that make car engines more fuel efficient. So if you equip a car with radial tires, there will be better fuel efficiency. Streamlined bodies भी करती हैं. Then multiple fuel injection points हो तो ज़्यादा अच्छा है. And catalytic converter with exhaust हो. तो मैंने 4 चीज़ बताई, जिसमें से 2 काफ़ी टेक्निकल हैं, जैसे मल्टीपल फ्यूल पॉइंट इंजेक्शंस हो और स्ट्रीमलाइन बॉडीज़ और रेडियल टायर्स हों. तो इन और कैटालिटिक कन्वर्टर भी है तो भी अच्छा है. तो ये अगर 4-5 चीज़ें होती हैं तो मतलब फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ जाती है. Then we have Hydrocarbon Vision 2025. This is related to the storage of petroleum products to ensure long-term energy security. तो Hydrocarbon Vision 2025 सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कुछ और होगा, हाइड्रोजन वगैरह का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसा, या रिन्यूएबल वगैरह. बट एक्चुअली इट इज़ related to the storage of petroleum products to ensure long-term energy security. Then asphalt जो होता है हमारा, that is also known as bitumen. It is a sticky black viscous liquid or semi-solid form of petroleum used in the road construction and waterproofing products. So asphalt is basically, it's a black viscous liquid or a semi-solid form of petroleum. So basically it is derived from petroleum and it is used in road construction and waterproofing products, या buildings. Now hydrogen can be used as a fuel in India if it is absorbed at a very low temperature by what substance that is released at that temperature generated by the exhaust. एक सेकंड, ये क्या है? Hydrogen can be used only when it is absorbed या burnt at a very low temperature, ठीक है? As a fuel in India if it is absorbed at a very low temperature by, okay, then by what substance that is released at a temperature generated by the exhaust. I think you have mistyped this. I think palladium hydride is a substance that is used to measure the temperature generated by the exhaust of cars, right? So let's check that out. Palladium, what was that? Palladium hydride. So for what purpose palladium hydride in cars? Now the AI is saying that it's used as a catalyst within catalytic converter, where it facilitates the conversion of harmful exhaust gases like carbon monoxide. वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा क्या है? Palladium hydride. What substance that is released at a temperature generated by the exhaust. Palladium तो मुझे पता है कैटालिटिक कन्वर्टर में इस्तेमाल किया जाता है, बट Palladium hydride का मुझे आइडिया नहीं है, बट फिर भी याद कर लो तो ठीक है. Now combination of methane plus air causes explosions in mines. One of the fundamental chemical used in explosive industry is glycerol, which is made from the nitric acid as well as H2SO4. तो glycerol is nothing but 2 सबसे strongest acids को mix कर दिया है, nitric acid and sulfuric acid, तो you will get glycerol and it's used in the manufacturing of explosives. Mines में methane और air के mixture को अगर कहीं भी ignition मिल गया तो explosion हो जाता है mines में, ठीक है? Then we come to this page. So remember that biogas produced through anaerobic fermentation of cellulosic material. तो anaerobic fermentation होना चाहिए cellulosic material का, तो फिर बायोगैस निकलती है. और ये क्या है? Methane, CO2, H2S, H2O, siloxanes. What is that? Methane, CO2, H2S, H2O, siloxanes. Not able to. So is there an option? Anyway, so biogas is produced through anaerobic fermentation of cellulosic material. अब जो LPG होता है इसमें ब्यूटेन ज़्यादा होता है प्रोपेन के मुकाबले. कोल गैस होती है वाटर प्लस, सॉरी नॉट वाटर, CO, H2 एंड CH4, ठीक है? जबकि वाटर गैस होती है CO प्लस H2. तो वाटर गैस में आप मेथेन मिला दो तो कोल गैस हो जाती है, ठीक है? नाउ गन कॉटन
नाइट्रोसेल्यूलोज से बनता है गन कॉटन. पहले के ज़माने में गन कॉटन नाइट्रोसेल्यूलोज से बनता था. ओके, देन हाईली फ्लेमेबल, first used to manufacture billiard balls. So gun cotton used to manufacture billiard balls. How come? Let's ask AI. Gun cotton used to manufacture billiard balls. Yes, gun cotton, also known as nitrocellulose, was used to make billiard balls from celluloid and early plastic. Okay, nitrocellulose. Gun cotton से billiard balls बनाते थे पहले. ठीक है. All right. So RDX there is another chemical name for RDX is cyclonite, and it's a plastic explosive used in C4. C4 is basically the market name of explosive RDX, and it was discovered by Henning. It is also known as hexogen or T4. ठीक है. So okay, तो blasting gelatin क्या होता है? ये बेसिकली नाइट्रोग्लिसरीन और नाइट्रोसेल्यूलोज जो हमने अभी पढ़ा था गन कॉटन, जिससे बिलियर्ड बॉल्स बनाई जा रही थी, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. नाइट्रोग्लिसरीन ज़्यादा होता है इसमें 93%, और थोड़ा सा होता है नाइट्रोसेल्यूलोज 7%. अब डायनामाइट सबको पता है अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था. और देखो पहले TNP बताने से पहले TNT देख लो. TNT बेसिकली होता है नाइट्रिक एसिड में तुम टोल्यूइन मिला दोगे तो TNT बन जाएगा. फिर नाइट्रिक एसिड में तुम अगर फिनॉल मिला दोगे तो तुम्हारा TNT नहीं TNP बनेगा, ट्राई नाइट्रोफिनॉल, विच इज़ ऑल्सो नोन एज पिक्रिक एसिड. ठीक है, तो दैट इज़ नाइट्रिक एसिड प्लस फिनॉल. फिर TNG क्या होता है? सो दैट इज़ सिंपली डायनामाइट, या TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन होता है, सिंपली नोबेल्स ऑयल बोलते हैं. नाइट्रोग्लिसरीन इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज नोबेल्स ऑयल. ठीक है. आमाटोल होता है बेसिकली अमोनियम नाइट्रेट विच इज़ एन एक्सप्लोसिव मिक्सड विद TNT, दैट इज़ आमाटोल. नाउ ऑक्सैलिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफी में. और अमीनो एसिड्स, देखो पहले ये जान लो, दो चीज़ अगर सुपर इम्पोज हो जाती पूरी आपस में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाती है. लेकिन अगर सुपर इम्पोज नहीं होती है, अगर सुपर इम्पोज एग्जैक्टली एक दूसरे पे नहीं होती है, तो देन बोथ ऑफ देम आर सेट टू बी ऑप्टिकली एक्टिव. ठीक है, तो वही चीज़ है. ऑलमोस्ट ऑल द अमीनो एसिड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन. अब ग्लाइसिन में क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव मीन्स दे आर एसिमेट्रिक एंड दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड ओवर देयर मिरर इमेजेस. ठीक है, तो ग्लाइसिन ऐसा है इकलौता अमीनो एसिड जो एक अपनी मिरर इमेज पे ओवरलैप कर जाता है completely, hence it is not optically active. Otherwise all other amino acids are optically active, meaning they do not overlap their mirror images. Then oxalic acid is used in photography. Lactose is a milk sugar. lactic acid तो produce होता है muscle fatigue के दौरान. और एसिडिटी की स्ट्रेंथ के बारे में देखें तो सिट्रिक एसिड इज़ स्ट्रॉन्गर दैन एस्कॉर्बिक एसिड. याद रखना, सिट्रिक एसिड इज़ मोर स्ट्रॉन्ग. अब ये है गैसोहॉल. गैसोहॉल क्या होता है? इथेनॉल प्लस गैसोलीन. तो इथेनॉल और गैसोलीन अब हमको 5% से 25% तक ले जाना है. मतलब E5 मीन्स 5% इथेनॉल और 95% गैसोलीन. ठीक है, तो 5% इथेनॉल और 95% गैसोलीन. अभी इस पे योजना चल रही है, इसको बढ़ाते जाना है, मतलब इथेनॉल का कंटेंट बढ़ाते जाना है. तो गैसोहॉल इज़ नथिंग बट इथेनॉल प्लस गैसोलीन. इथेनॉल प्लस गैसोलीन. देन एंटी फ्रीज क्या होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल अगर मिला दोगे तो जमता नहीं है. ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकॉल, तो पहाड़ों में फ्यूल में ये थोड़ा सा मिला दिया जाता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, ताकि जमे ना पेट्रोल या डीजल. देन ऑक्सैलिक, मैलिक एंड साइट्रिक तीनों मिलता है टोमेटो में. ठीक है, टार्टरिक एसिड तुम्हें ग्रेप्स में मिलता है, वाइन में मिल जाता है. एंड टार्टरिक एसिड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ बेकिंग पाउडर. मालिक एसिड मैंने बताया एप्पल में तो मिलता है, बट मालिक एसिड टोमेटो में भी मिलता है, बट ज़्यादा मिलता है एप्पल में. ब्यूटायरिक एसिड ये बटर में मिलता है. प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड बॉडी ऑर्डर इज़ रिच इन प्रोपियोनिक एसिड. देन प्रेजर्वेटिव फॉर स्टोर्ड ग्रेन्स, इसमें प्रोपियोनिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं. अच्छा, प्रेजर्वेटिव मैंने बताया था ना, सोडियम प्रोपियोनेट, प्रोपियोनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ प्रेजर्वेटिव मिल्क और चीज़ वगैरह में. और बॉडी ऑर्डर में प्रोपियोनिक एसिड आता है. ये एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है बॉडी ऑर्डर में प्रोपियोनिक एसिड. ठीक है, तो इसको देखते हैं. सो यस, बॉडी ऑर्डर कैन कंटेन प्रोपियोनिक एसिड विच इज़ कॉमन एसिड दैट कैन कॉज वाइनेगर लाइक स्मेल. ओके, ठीक है. फिर एसिटिक एसिड तो ये काफ़ी कमज़ोर होता है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज इथेनोइक एसिड एंड इट इज़ फाउंड इन विनेगर. तो अब आप देख लो, सबसे स्ट्रॉन्ग हो गया सिट्रिक, फिर एस्कॉर्बिक, और फिर मेरे ख्याल से एसिटिक. कार्बोनिक एसिड ये वीक होता है, ये ब्लड और टिश्यूज़ में मिल जाता है आपको. ठीक है, कार्बोनिक एसिड.
फॉर्मिक एसिड ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, ऑल्सो नोन एज मेथेनोइक एसिड, फाउंड इन द इंसेक्ट स्टिंग्स। अब ये देख लो, इथेनॉल को तुम क्या बोल रहे हो, या सॉरी एसिटिक एसिड को तुम बोल रहे हो इथेनोइक एसिड, और फॉर्मिक एसिड को बोल रहे हो मेथेनोइक एसिड। तो ये याद रखना, एसिटिक एसिड इज़ इथेनोइक एसिड and formic acid is methanoic acid, and it is found in the insect stings. Okay, then carbonic acid is found in the blood and tissues. Propionic acid is found in the body odor. ठीक है, अब ये है थोड़ा और, तो इसको देखते हैं अब अगले में।